sink themselves. हर एक दिन अपने आप को डुबो देते हैं सोच में और इमोशंस में, और फिर ना खुद खुश रह सकते हैं और ना ही आसपास के लोगों को जो भी चीज़ें चल रही होती है उसमें भी खुशी पा सकते हैं। क्योंकि फेलियर और सक्सेस आई दिस इज ऑल टेम्पररी, नथिंग बिल्कुल विल स्टे फॉर एवर। आई थिंक ये उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, तो ये आते भी रहेंगे सबके साथ। यू शुड नॉट से व्हाई मी, why बिल्कुल it happens with me। and कुछ लोग हैं जो हमेशा about everything that are happening और अपने आप को कोसते रहते हैं। सो उसी के बारे में आज हम बताएंगे कि जो लोग भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और जो निराश हैं किसी भी वजह से, सो just don't give up, because these are the things which happen in your life, on and off it, everybody in fact। तो failure is nothing, जैसे कि अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था, it's just the first attempt of learning and gathering the experiences। जैसे हमने पिछले शो में भी कहा था कि जो सबसे richest person होता है, not the person who has bank balance or big houses, it's a person who has the best experiences, and the person who uses his experiences to help themselves as well as help people around them। absolutely. I mean, we all experience failures, right? Some people know how to learn from it and be more experienced, and become more successful when that eventual when it's meant to happen, right? Because you're learning, basically it's chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, right? अब किस point के ऊपर आप सोच रहे हैं कि okay, जब तक ये chapter 10 नहीं आएगा उस वक्त तक मेरा सक्सेस, मैं अपने आप को सक्सेसफुल नहीं, I'm not going to consider myself successful, but that is not the right attitude, because the right attitude is that even with chapter 1 you learned something, right? It might not have given you the outcome you hoped for, but chapter 2, 3, right, they are all just experiences. Because chapter 1 to 9 is you are actually acquiring such a best experiences, and if you don't utilize them, you will not enjoy even the chapter 10 also। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपके पास अभी है, फिलहाल अगर आप अभी जो आपके आंचल में जो भी डाला है, अच्छा हो बुरा हो, अगर आप उसको embrace नहीं करोगे, if you don't understand that, not be mindful in the present situation, you will not love, because कोई ना कुछ कहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। अगर regardless of people say or not don't say, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ होते रहते हैं। लोगों को तो इग्नोर करना चाहिए, करना चाहिए, राइट? देखो हाँ, हाल ही में आई थिंक आई केम टू नो, आई थिंक बिकॉज व्हेन पीपल जस्ट टॉक टू मी एंड देन दे रिलेट देयर प्रॉब्लम्स और बोलते हैं कि मैं कि भाई ऐसे हुआ था, मैं क्या करूँ, वैसे हुआ तो क्या करूँ। So there are two people who are actually talking, and the first person who thinks they're still doing the discussion, and then they just like trying to bring attention to these areas. But the second person always was perceiving that their first person is accusing them. So it's all about perception also, Saima। It's self-perception. Yeah, self-perception कि तुम मुझे accuse कर रहे हो, and the other, the first person, whereas I think that I'm just discussing, so it's all about how you take it, because you can just deviate the problem by with unpleasant discussions, or you can just bring it together by focusing on certain things। काफी लोग डिस्कशन के लिए रेडी नहीं होते हैं, और उनको लगता है कि भाई इसने मुझे मेरे साथ ऐसे क्यों कहा, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है। एंड ऑफकोर्स उनके साथ भी जब जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आ जाते हैं तो वो ले नहीं पाते, और फिर निराश हो जाते हैं, नाराज होते हैं, ना खुद खुश रह पाते हैं और ना ही कोई लोग आसपास से खुश रख सकते हैं, रह सकते हैं। Failure is basically defined as lack of success or the inability to meet a certain expectation. So the problem is that we read just too much into failure. We get too कि ये फेल हो गया है, ये हो गया है, मेरा ये पैसा लूज हो गया है, मेरा the thing is, this is something that a friend of mine had been trying to really teach me, and मुझे बहुत hard हो रहा था. I've gone through a lot of highs and lows in the past 2 years, and वो मुझे इतना समझाने की कोशिश कर रहे थे, because he's extremely successful, but उनको उनके mentor ने ये चीज़ बताई थी कि ये failure वगैरह कुछ भी नहीं है. you know Basically the most important thing is to just keep navigating the water, and उस water को navigate करने के अंदर whatever is coming your way, you just keep handling it, you just keep dealing with it, you just एक एक आप किश्ती में सवार हैं और you are navigating the water, और एक उसमें एक आपने देखा वो पानी आना शुरू हो गया, उस एक सुराख हो गया, right? So you have to sit there and you have to figure out, okay, how am I going to cover this hole so I can continue, keep rolling down and just keep continuing my journey, right? Absolutely। और आपने कभी देखा है कि काफी लोगों ने देखा होगा ECG, have you seen the graph of the ECG, right? So ECG goes up and down, तो जिंदगी भी ऐसी up and जिंदगी down, भी और you ऐसे can ही है. only see the flat line where there's nothing happens।
तो जिंदगी में उतार चढ़ाव सबके साथ होते रहते हैं, और अगर ये लोग वो हैं साइमा जो जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहते, और जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आएंगी, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि करना क्या है। तो दैट इज लाइक दे ऑलवेज प्रोबेबली एक्सपेक्ट अ फ्लैट लाइन, कि कभी कुछ बस But हैप्पीनेस से कभी चाहिए। flatline doesn't exist. Doesn't exist because flat line only exists when there's no life, right? It's just like बिल्कुल. ECG. So ECG goes up and down. That means life is still existing, life is still going on, and your life is, जैसे आपने बिल्कुल सही एनालिजी दिया है पानी का, क्योंकि जिंदगी समस्याएं पानी की तरह है। या तो आप तैरना सीखिए, बी स्मार्ट, या आप बोट में जाइए, या क्रूज लीजिए, यानी कि जिंदगी जो समस्याएं थे तो लोगों से मिले, क्योंकि क्रूज में काफी लोग होते हैं, तो जिंदगी की समस्या में भी जस्ट मीट पीपल, टॉक टू देम, और जस्ट सी कि किस तरह से आप वहां से बाहर आ सकते हैं। मोटिवेशन स्पीकर्स सुनिए, करिए। सो जस्ट बी स्मार्ट, इधर लर्न स्विमिंग, जस्ट तैरिए इन समस्याओं के साथ, या तो डूब जाइए। इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू परसीव How थिंग्स। you perceive things. Bilkul. यस, So the thing is, right, because we read too much into failure, और राइट, कोई चीज में वो रिजल्ट नहीं आया, वो ग्रेड्स नहीं आए, तो ये उस पॉइंट से शुरू होता है जब हम अपने बच्चों को हाउंड करते हैं, राइट? बिकॉज हम अपने बच्चों को, पर्सनल लेवल तुम्हारे, पे आ राइट, जाता है बिल्कुल। तुमने तुम्हारे भाई को देखा, बहन को देखा, तुम्हारी कजन को देखा, तुम्हारे पड़ोसी को देखा, राइट, पड़ोसी के रिश्तेदार को देखा, राइट, रिश्तेदार के रिश्तेदार को देखा, राइट, इट्स नेवर एंडिंग, राइट, वी आर ऑलवेज कंपेयरिंग, वी आर इंस्टिलिंग इन आवर चिल्ड्रन। एंड मैं कभी किसी दूसरे की बात क्या करूं, मैं तो हमेशा अपनी बात करती हूँ, बिकॉज आई हैव डन दैट, you know, I had very high expectations from my kids. I was this helicopter mom until, you know, everything kind of crashed and I had to reassess things. What I'm doing is wrong. You know, my kids have not come into this world to come up to my expectations and to fulfill my dreams. They have come into this world कि वो अपनी journey flow करेंगे. You know, Kalpana, my older daughter always asks me, she says, Mom, uh, why did you have children? So Kalpana, वेरी why डीप did you क्वेश्चन यार why ये। did you have children? Well, that is a very deep question to even think about it, क्योंकि हम लोग flow में इतने हो जाते हैं साइमा कि when you just like when the life stops and somebody asks us such questions, like you are answerless कि क्या reply दें, but yes, why do we have a children? I have no answer for that, to be honest, Okay, so there's no I'm going to let you ponder over it, and next time जब हम next week आएंगे तो हम इसको फिर से ले आएंगे, because जब मेरी बेटी ने भी मेरे से पूछा, तो I was like, we were just in fitting in the framework of society, yes, society but expected us to have right, children. and then जैसे आपने कहा कि yes, पर्सनल लेवल पे हम लोग चाहे कितनी भी बातें करें, लेकिन जब घर जाते हैं तो एक वो हेलीकॉप्टर मॉम का जो फैंस है वो Yeah, ओपन हो जाती हैं, and we try to just do multitasking and then protect them and then guard them and say this and that and everything. But having said that, by doing the show and even before the show also, काफी चीजें मैं भी इवॉल्व हो चुकी हूँ कि कोई बात नहीं, I don't worry and I don't care what people think about my children. exactly. अगर जो मेरे बच्चों ने अगर धीरे से भी किया, धीरे से भी किया, that is fine. But of course, it's not उनकी कि हम अपनी कुछ और जर्नी है, करें। राइट? Yes, उनकी अपनी उनकी जर्नी है। जर्नी ने उनको जिधर भी लेके जाना होगा। हाँ, कल्पना, मैं किसी और की क्या बात कर रहा हूँ, आई वॉज एन ऑफर स्टूडेंट, ओके, हाँ, आई वॉज टेरेबल। जब रिपोर्ट कार्ड्स आते थे उसपे इतनी रेड लाइंस होती थी, इतनी रेड लाइंस होती थी, और हर रिपोर्ट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होता था कि शी टॉक्स टू मच। अब द बेस्ट पार्ट वाज कि मेरा पूरा जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था ना, हम लोग को बहुत हम लोग को बहुत सारा थी, हम बहुत हम सारे लोग सबके चाहते थे। सबके रिपोर्ट कार्ड सिमिलर होते थे। Something I think मैं दूसरी क्लास में गई थी, I think I have the same remarks too, or in fact I was just purging my house after coming back from India, और मैं जब निकाल रही थी मुझे पुराने पॉडकास्ट भी मिले, and one thing I want to say, I don't mind saying now on air क्योंकि अभी इसको सुन के हंसी आती है, लेकिन उस वक्त तो दिल धड़क रहा था, किसी चीज I'm sure उसको लेके हो रहा था, लेकिन there was a time where I made my uncle sign the report because मुझे उस दिन को नहीं दिखाना था, जैसे ये होता है, this all happens, but now अभी उन सब कुछ इसको सोच के हंसी आती है, but yes. But Kalpana, like um, my father always, I was my father's largely, and my father's side of the family, the girls were always sarkataj, not just with my father, with my father's brothers and everyone, my Okay. sisters, everyone, right? So my father would always say to me, "Koi baat nahi, you know, agli dafa theek ho jayega. Just, you know, it's okay. We Right. saw you tried, you know." But um the thing is I think what they did was they didn't damage my self-esteem. Right. See, that's very So important.
सो उस पॉइंट के ऊपर जब आई फिनिश्ड माई A levels करने के बाद, when my brother was here, and my brother was actually the intelligent one of the siblings, तो मैं तो बिल्कुल नहीं थी, बहुत डफर थी. But when my brother did his engineering, he came here, he did his masters. जब उनका masters खत्म हुआ, तो I told my dad, I had a US का visa, so I told my dad कि I was like, Bhai has finished, so now you don't have to pay for him, but you're used to paying for him. So how about I go? Because you're already in the flow of paying. So can I go? And my dad, there was a 10-year difference between me and, 9, 10, 8, 9, 10 year difference between me and my older brothers. And I was, the youngest who always got to do everything, right? Live life with my parents because my brothers were in the boarding. So when I asked my father, I was like, okay, can I go? I have a visa. I'm scheduled to take my SAT, my TOEFL. So can I just go to the US? So my father's he asked me 2 questions, Kalpana. That was it. Nothing else he asked me. One question was, कि, are you sure तुम्हें तो पढ़ने का भी शौक नहीं है? So I said, yeah, because it was an adventure. And then the second thing he asked me, he was like, are you sure you don't want to get married? Because, that's it's like you are born in our countries because आपकी मंजिल क्या है? आपकी मंजिल है कि आप उस स्टेज पे पहुंचे जिस स्टेज के ऊपर आप शादी कर लें, right? But शादी is not supposed to be the ultimate end of your life. It's part of your journey, right? So I was like, nahi, I really want to go. And that was it. And it's been such an adventure, right? The thing is ke, highs, lows. I always talk about the last 2 years being most difficult. I talk about the business hit that we took in 2016. Just point ke upar, that was my changing point, my pivotal point. Just point ke upar, I started redefining myself, growth, education, just learning, learning from being opening myself enough to the point where I was ready to learn from others. तो वो चीज के अंदर it starts, उसके बावजूद I own my failures. इतनी दफा लाइफ में जो जिस तरह हम वर्ड को इसको डिफाइन करते हैं फेलियर, वो चीज़ों को मल्टीपल टाइम उन फेलियर्स को मैंने एक्सपीरियंस किया है. बट द थिंग इज आई ओन देम, आई एम्ब्रेस देम, because as difficult as those things were, but those were my choices. They were my decisions. You don't blame others. I can't. Normally, people also have the tendency of blaming. Yeah. बाज़ दफ़ा हो जाता है कि आपकी वजह से मैं ऊपर नहीं आ पाई, आपकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया हूँ, ये कर पाई हूँ. ये सब काफ़ी लोगों में हो जाता है कि जो जिनका सेल्फ एस्टीम या फिर जिन्हें कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें इनसिक्योरिटीज बहुत होती है, तो वो सामने वाले पे ही नोटिस करता है कि उनकी तवज्जो हमेशा फोकस हमेशा सामने वालों पे होती है कि इनकी वजह से लेकिन जब इफ यू शिफ्ट दैट एनर्जी एंड देन यू जस्ट पे विद एंड लुक अपॉन योरसेल्फ, आई थिंक जो कुछ भी आपके साथ होता है वो सबके साथ होता है, चाहे कम ज्यादा थोड़ी ऐसा होता रहता है. लेकिन अगर आपका फोकस सामने वाले पे होगा कि इसकी वजह से ये, इसकी वजह से ये, इसकी वजह से यू विल नेवर ग्रो. बिल्कुल. धूप तो है, धूप का काम ही है, यानी कि ये स्कॉचिंग जो सन होता है, जैसे वेरी तपती धूप में कोई खड़ा नहीं हो सकता है. लेकिन अगर आप इसे सोचते रहेंगे कि माय गॉड धूप है, कुछ नहीं होगा. In fact, instead of that, just एक अगर पेड़ आपने बो दिया और छाया हो गई, उसके सामने बैठ गए, यानी कि you are just finding your own solutions for that. You have to. वही के वहीं रहेगा, धूप तो नहीं जाएगा, नहीं समस्या कहीं जाएगी नहीं. But you have the energy and courage to just sow the seed of the shadow and then stay in that and be happy in that area, right? So Yeah. stop blaming others. उसकी वजह से कुछ नहीं. It's the victim mindset, right? You need to, जब तक you don't change the victim mindset and you don't come out of that victim mindset, उस वक्त तक you will not become a victor. Right, that is very true. So it's up to you. That's very true. And yes, and जो हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर आपके भी कुछ ओपिनियंस हैं, आइडियाज हैं इस टॉपिक पर, यानी कि जब फेलियर्स हिट करती हैं आपको, तो आप किस तरह से उन्हें करेजियस तरीके से आपने उन्हें एम्ब्रेस किया और आगे चल पड़े, तो ये अगर आपके कुछ ओपिनियंस हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा. हो सकता है कि आपके जो भी टिप्स हैं वो किसी और के काम आ जाएं. हमारे स्टूडियो का नंबर है
214-817-3333. You're welcome to give us a call and share your thoughts and your opinions. And we are talking about failure today. This is Heart to Heart with Saima and Kalpana. And we come to you every Thursday on 104.1 FM, 700 AM, Radio Caravan. You can listen to us on jointhecaravan.com. We do live stream. We are streaming live on social media, YouTube, Facebook, LinkedIn, even Instagram पे first 30 minutes जाते हैं, the real estate segment. So we are streaming live. You can join us anywhere. We come to you, and we hope that we hope to share our journey with you. And जिस तरह हमारी lives change हो रही हैं, jump on that bad wagon, and we hope that we change our lives together. बिल्कुल जिंदगी आई थिंक ये समस्याएं सारे एक पानी की तरह हैं, या तो पानी बहा दीजिए या फिर तैर दीजिए या खुद डूब जाइए. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू परसीव थिंग्स, हाउ यू हेल्प योरसेल्फ इवॉल्व. या तो जस्ट डिसॉल्व हो जाए, इवॉल्व हो जाए, सब निर्भर करता है साइमा हमारी सोच, very well said. हमारी प्रैक्टिस के ऊपर. सिर्फ मतलब सुनना काफी नहीं होता. आई थिंक इसके ऊपर प्रैक्टिस करना भी, अमल करना भी जरूरी होता है. So there was a call coming, and if you want to call us back, that would be awesome. We're talking about failure. Too often we tie it to our sense. We tie failure to our sense of self-worth, self-esteem, self-acceptance. The expectation we fail to meet is often our own, or one that we have created in our own head. So हम अपने दिमाग के अंदर सोचते हैं कि हम फेल हो गए हैं, और उस पॉइंट के ऊपर हम we are not able to move forward. But the thing here is that failure can be very useful. We can learn from it. We can gain a lot of new insights, and we can learn how to do better next time. The right kind of failure gives us new information and teaches us something that gets us closer and closer to our goals. Right, and with that I think ये भी है कि जैसे कुछ लोग, जैसे हम कह रहे थे, जैसे हमने कहा था प्रोग्राम के पहले भी, अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी कहा था कि फेलियर इज का जो एब्रिविएशन फुल फॉर्म है, इट्स द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ लर्निंग, बिकॉज़ एवरीथिंग इज एक्सपीरियंस. यू जस्ट गैदर एक्सपीरियंस फ्रॉम एवरीथिंग. जब छोटे बच्चों से आप कुछ सीख जाते हो तो वो आपका एक्सपीरियंस बन जाता है, फिर बड़े लोगों से आप कुछ सीखते हो. तो आई थिंक कभी कभी नेचर को ऑब्जर्व करना, लोगों को ऑब्जर्व करना भी जरूरी होता है. नॉट टू कंपेयर, ऑफ कोर्स, नॉट द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, बट जस्ट टू सी दैट हाउ this world exists on disparity, how people are different, the way they think and the way they perform, they receive things. और इससे प्रॉब्लम ही होता है ज़्यादा, क्योंकि ये सब सोच जाने के बाद जब हम किसी से बात करते हैं और आपका जो बैलेंस है वो संतुलन खोता नहीं है. यू जस्ट लाइक वो से बात करते हो और सामने वाला हाइपर हो रहा है, मतलब यू जस्ट सी दैट इट्स ओके. यू डोंट हैव टू गेट सेम level of excitement or overwhelm because that person is just losing their control of speech or control. It's fine, because maybe their journey is going to go more to just either experience and learn new things. But again, having said it, जैसे साइमा ने कहा था कि she owns the failures. So don't blame anyone for whatever happened in your life or whatever did not happen in your life. You can of course show gratitude and do appreciate people if that happens. लेकिन अगर जब आप डूब जाते हो तो इनकी वजह से हम डूबे, इनकी वजह से ये हुआ, इन्होंने हमें ऊपर नहीं आने दिया, इन्होंने हमें प्रमोशन, इनकी वजह से हमें प्रमोशन नहीं आया, ये सब चीज़ें आई थिंक कोई आई थिंक मायने नहीं रखती है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि कोई बात नहीं, जब हमारा टाइम आएगा तो हमारा टाइम आएगा. Absolutely. You know what? Learn and live by this motto that if you're not failing enough, it means that you're not growing enough. You're not taking enough chances. You're not taking enough risks. And in order for growth to happen, you have to take more chances. You have to take more risks, right? Because if everything turns out exactly the way you expected, then life will have no charm. Life will have no variation. So in order for there to be variation, for there to be, for there to be growth, for there to be ideas, you have to keep trying, and sometimes you will fail, and you will realize that, okay, you know what, इसको इस तरह से try किया है, अब इसको किसी दूसरी तरह से try करें, अब इसको तीसरी तरह से try करें. कहीं ना कहीं तो वो
वो success is sitting there waiting for you, the success that you hope, that you are envisioning for yourself. और कभी ये भी होता है कल्पना कि you are expecting certain outcome and वो outcome नहीं होती, and you're like, okay, you know what, that did not work, I need to try something different. And when you try something different, that gives you just these amazingly phenomenal results that you're like, wow, you did not expect it, and just something really brilliant came out of it. एब्सोल्युटली। और अच्छा भी लगता है कि आप हमेशा जो लाइट के आगे बैठे रहोगे और लाइट हमेशा चमकती रहेगी आपके ऊपर, तो आप बोर हो जाओगे। मतलब कभी कभी लगता है कि चले, अगर अंधेरा सबके साथ आता है, कभी कभी यू हैव टू बी इन शैडो एंड यू हैव टू बी इन डार्क एंड टू एक्सपीरियंस हाउ इट हैपेंस व्हेन यू आर इन डार्क। सो तभी आप जो है वो लाइट और लाइट की जो स्माइल लाइट हो कोई भी हो आप एंजॉय कर पाओगे। वरना हमेशा लाइट में रहोगे, हमेशा हैप्पीनेस इज हैप्पीनेस इज हैप्पीनेस साइन, हमेशा सक्सेस रहेगा, तो भी आई थिंक जिंदगी थोड़ी सी उदास लगती है। एंड इट्स ऑलवेज अ मोटिवेशन फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स कि जब आप जो है failure say या फिर whatever the attempts that did not work, the first attempt did not work, and you have evolved. So it's a lesson for you, and it's a lesson that you are actually inspiring others also कि इसकी वजह से देखो बजाय इसके होने के बावजूद भी मैं जो है जिंदगी से हारा नहीं है या हारी नहीं है, I still was able to just go with the life. So we are about to go on our next break, but while we are on a break, do consider ideas for reframing failure in your own mind so that you can change your failure with resilience and redefine your own life. And we'll see you in a few minutes. All right. So, how is everyone doing? So, कैसे हैं सब लोग? Let's see. कौन कौन join कर रहा है? कैसे हैं आप लोग? Zafar Khan, how are you? Salman, so lots of Khans. Zafar Khan, Salman Khan, uh, Zankana Shah, कैसे हैं आप लोग सब? Janalam Bandro, uh, Mar Faisal. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for your compliment. Thank you for your kind words. Michelle Khan, Sajana, how are you doing? Iqbal Sagar, Nuran Shah. Amir, how are you doing? कैसे हैं आप लोग? So, hope all is well. Hope everyone is doing well. So, um, आप में से कोई भी अगर मुझे ज्वाइन करना चाहे, join me here on the live stream. So if you have something to share, you have some words to share, you have something to contribute. So दुनिया तो इसी में change होती है when you are touching lives. So if you would like to join me right here on my stream and share some words, break pe आइए, join us and share whatever it is you have to share. So I'm gonna switch over. वैसे आज कल्पना की बर्थडे है, तो अभी there is some cake that we have. So Kalpana, you have to hop over the charger because maybe. When you come here, do you mind just putting go live here? क्योंकि अभी टाइम है 2 मिनट का, 2 मिनट को कितना लेकिन इसमें बटन प्रेस करना पड़ेगा। You can do that? Okay, perfect. ठीक है, फिर तो सलाम लगानी पड़ेगी because I've had to plug it in. इधर कहीं और तो plug नहीं है, यहाँ पर है okay? Okay, so maybe that would work better. Okay, so this is better. So जब हम console पे, when we are on the console, we at halfway through the show, then I let Kalpana take over. So Kalpana takes over and does the second half, and oh, मैं अपना पानी गाड़ी में भूल गई.
Okay, so back in action. Yeah. So we have some cake here. Thank you so much for that. You're most welcome. मैंने इतनी स्पीड में उठाया है. I was like, okay, you know what? I don't have time. uh, my daughter's had some. Her car has had some issues. So I was just all morning sitting there trying to figure out. You know, she's taken by. I mean, she herself has taken 2 COVID tests since yesterday. Because उसको नज़ला जुकाम हो रहा है. And Do you mind pressing go live? yeah. Yeah. All right, welcome back. आप सुन रहे हैं रेडियो कैरावान और प्रोग्राम है हार्ट टू हार्ट और जो आता है हर थर्सडे 1 बजे से लेकर 3 बजे तक विद मी द वन एंड ओनली सलोनी आरजे पटना और मेरे साथ होती है मेरी ग्रुप से co-host. This is Saima Dillon. Let's touch lives together. All right, तो ब्रेक में जाने से पहले हम हमारा जो टॉपिक आज हम बात कर रहे हैं वो है फेलियर. जब फेलियर है वो हर के साथ सबके साथ होती है. Everybody faces them. Failures and successes, these all are part of life. And इसकी वजह से जो है कुछ लोग जो है इन्हीं फेलियर्स को एम्ब्रेस करते हैं, उसके साथ इवॉल्व होते हैं, सीखते हैं कुछ नया चीज़. लेकिन कुछ लोग हैं वो या तो सेल्फ ब्लेम करते हैं या फिर दे जस्ट स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स. एंड बिकॉज ऑफ दैट ना वो खुद खुश रह पाते हैं. क्योंकि उनको लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, व्हाई मी एंड व्हाई इट हैपेंस विद मी and they did this to me, because of that it happened, because of that it happened. तो वो डूब जाते हैं जिंदगी की पानी में डूब जाते हैं. So I think the thing what we're talking before the break is, so these all problems are like water. Either learn to swim across or just take a boat, just learn to be smart, or just take a cruise, which is just take the help of others. Go for counseling, go for therapy. There are many choices, लेकिन it all depends आप क्या चाहते हैं जिंदगी के साथ, वही आपके साथ जो है sooner or later will happen to you. कल्पना आप ही की एग्जाम्पल के ऊपर you know do you know how to swim? Oh yes, Okay. that is a very best example to say, Saima, क्योंकि मैंने ये mention किया था couple of weeks back, in fact couple of months back, what happened with me when we went to Florida. और मुझे swimming नहीं आता, मुझे रहना नहीं आता, and we were in the Florida beach in Gulf of Mexico for 22 minutes. मैं और मेरी भांजी यहाँ जिन्हें तैरना नहीं आता था, we went for snorkeling. मेरे बच्चे जो जिनको आता था वो तो चले गए और हम लोग fortunately we had life jacket. और तो उस बंदे ने कहा कि आप देखिए बिल्कुल कपल ऑफ फीट ही था और उसने कहा कि तुम वहाँ चले जाओ उस पैड के ऊपर एंड देन एवरीथिंग विल फाइन. बट ऑफ कोर्स हमें लगा कि हाँ नॉट अ प्रॉब्लम, हम जा सकते हैं. लेकिन क्योंकि तैरना नहीं आता था तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स इट वी वर गोइंग अवे. तो विद इन अ मिनट वी वर जस्ट स्कैटर्ड ट्रायंगल में, वो यहाँ मैं यहाँ दूसरी भांजी कहीं और. एंड और पता था कि कोई ना कोई आएगा रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन बाय द टाइम दे रियलाइज्ड इट कि हम लोग आएंगे, it was 22 minutes. Of course they came and they rescued us. They took us out on a banana boat and we went back. लेकिन this episode से मैं निराश नहीं हुई and I went for the swimming lessons. मैंने कहा नहीं मुझे सीखना है swimming. No matter what it is, I need to know how to flow. Yeah. So it all depends. कुछ लोग हैं जो डर जाते हैं कि मैं फिर कभी फ्लोरिडा जाऊंगी, फिर कभी मैं बीच के पास ही जाऊंगी, and then डर जाते हैं. It's all up to you. I mean, you want to stay away from that क्योंकि problems इस हालत में किसी और रूप में आ ही जाती हैं. But I think that was something that I said that no, I need to learn swimming at least so that I'm able to float when I'm in water. So there are two things which come from this analogy. Mm-hmm. And one of those things is that when you are in water and when you are swimming, Mm-hmm. it has a different impact. But Right. if you just lie down on water Mm-hmm. and you just simply float, and when you learn swimming, try that. कि अगर आप Back float. if you just
plop on the water, whether your face is in the water or on your back, and you're just floating, it just feels like कि सारी आपकी अंदर की जो negativity है वो पानी जैसे खींच लेता है, because you're just lying there. You're just like, surrendering You're surrendering bouncing up. yourself, Yeah, and bounce life up. just is taking you with its flow. That's तो true. जब आप surrender कर देते हैं तो you're just shifting all your worries, everything, you're taking it out from you, and you believe that nothing is going to happen, you're just going to be fine, because people don't realize. So I have a really good friend of mine, and she believes that she's उसकी intuitive abilities बहुत strong है when it comes to other people's marriages, other people's relationships. So I feel I don't think it's her intuitive abilities as such, but I think it's also when she feels, देखो जब आप अगर आप उस वक्त फेयर कुक के अंदर जब कंज्यूम होने लगते हो, एंड आप ये सोचते हो कि ये हुआ है तो ऐसा तो होके ही रहेगा, या वो हुआ है तो अब ये हो जाएगा, काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा है तो अब कुछ ना कुछ बुरा होगा. तो people actually don't realize, but this universe, it works on the basis of whatever we are putting, whatever energy we put out there. अगर हम fear को भेजते हैं universe के अंदर, तो basically we are sending this energy out there कि okay, कि ये चीज है तो ये चीज हो. So because the universe doesn't know कि what we are asking for कि ये negative है या ये positive है तो ये हो या वो नहीं हो, मगर हम खुद like we repeatedly say कि what we think creates our life is based on our own thoughts. Because whatever we reflect, whether verbally or just our aura, I think that aura that vibes. तभी तो सामा कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों से हम मिलते भी नहीं हैं, आप उनको देखते लगता है कि just stay away from them. I don't know, something, the vibes are not nice. और कुछ लोगों को देख के even regardless of मिलो ना मिलो, you will love to just go meet them and stay in their circle. Why? Because I think the energy that they're reflecting, positive or negative, will attract people or will just let people others go. I think this is very important, or this is something even I'm trying. For that, I would like to take a caller on air and let's see what they have to say. Hello, you're on the air. How are you doing? Good afternoon. Good afternoon. Who is this? Hey, Sadhna, how are you doing? Are you listening to the show? And so today we are talking about failure. Like everybody faces failure, but some people get really disappointed with that. So, do you have to say anything on that, Sadhna? Okay. Oh. So Sadhna, you feel that you're looking for jobs, and आप jobs को ढूंढ रहे हैं, and you're not finding the jobs that you want, and that's why you feel that you're a failure? Hello? Can you hear us? Yeah. तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो आपको लगता है कि you are a failure because you are not able to do something. Is that so? तो लेकिन साधना आई थिंक ये कि see one thing, everybody wants to do something, लेकिन आप जो कुछ भी अभी कर रहे हैं, whatever thing, don't you think that that's also helping others around you? So you need to just love what you're doing at this moment. क्योंकि जो you love what you're doing now, that's great. What is it that you're doing, Sadhna? You're what? Okay. So do you think maybe life is kind of maybe changing your course?
of your direction and trying to tell you that, because देखो जिंदगी के अंदर life is all about growth, right? So at different stages of life it's not necessary कि अगर हमने जाके engineering की degree ली है तो हम engineering करके ही खुश रहेंगे, या अगर हम physician बने हैं तो अब हमने इतनी तालीम उसमें डाली है तो अब हम वही करें सारी life because हमने इतना पैसा उसमें invest कर दिया है. But sometimes you try different things until you find that one thing जिससे आपको बहुत खुशी पहुंचे. And I think that's what cooking is doing for you. So maybe, do you think maybe you need to look for a different kind of a job, or do you think maybe you want to go and take some, culinary classes and get into something that has to do with your passion for cooking? You like serving. देखो उसमें भी तुम कुछ कर सकते हो साधना, क्योंकि देखो आजकल तो the media and the social media has a lot of options, so you can just whatever you love, just make a small blog and post it on Facebook, post it on the social media. हो सकता है कि धीरे धीरे, मतलब not immediately, हो सकता है धीरे धीरे you'll get some you'll get noticed on Facebook or whatever apps you have. तो ये जो चीज में आप अच्छे हो, why don't you start doing on that instead of just of course you do your trials on the the panel basis, लेकिन जिसमें आप अच्छे हो, try on a small basis because everything starts with the baby steps. So keep trying, and then we'll wish you all the best, and if something will happen. Okay. हाँ बोलो. Happy birthday song you will play. That's definitely will do that. Any specific song? Zarur. I will play that and thank you. Thank you so much, and stay tuned, and we'll try to play that song. Thank you for your call. Thank you. Alright, तो जी हाँ, जिंदगी में यही होता है कि कभी जो है उतार चढ़ाव होते हैं. हम लोग किसी के पीछे भागते हैं कि हमें चाहिए, हासिल नहीं हो पाता इमीडिएटली. लेकिन निराश ना होइए. Just see that, जैसे कि if you remember last week हमने कहा था कि introspect yourself, just pivot and look upon yourself, what are you good at, and try to do that in a small steps, and hopefully definitely something will work out sooner or later. So there are these different scenarios, right? So for example, a senior director he seeks a promotion for a VP position, and he's competing against other candidates. And he receives positive feedback, but gets told that the leadership team felt that hiring an external person would be better for the company. So does that mean that that person did not get that job as a VP? It means that that person is a failure. Or it means that an external person coming in as part of the team and bringing in different insight and a different point of view will help them more with their growth. So देखो ये अलग-अलग नजरिए हैं, right? They are just different perspectives. So failure is not really something which is supposed to set you back. Perhaps something different happens and it's going to give you a different experience, and it might give you a different outlook and help you go in a different direction. बिल्कुल सही, क्योंकि जब धक्का नहीं लगता किसी भी वजह से, जिसको हम फेलियर का नाम दे देते हैं, ये जो धक्का नहीं लगता, I think this bump is very important for anybody, क्योंकि जब that speed breaker, that pause in a life, and that the analogy that you were giving, that so these things are very important, and it happens with everyone. लेकिन this will actually should help you, and if it helps you to evolve and to think about it and analyze what went wrong, because businesses में साइमा जो business करते हैं उनको तो पता होगा कि they always have the meeting, and then they just introspect what went wrong last year, what can we do, what are the things that we should not repeat so it doesn't reoccur again in future for the next planning. So these things हमारी जिंदगी के साथ में करना चाहिए, क्योंकि what went wrong, what are the things, the situation happened which I reacted in such a certain way which I shouldn't have been. What can I do to evolve myself, to embrace these things when people say something? So these are analysis is also important for anybody. In fact, I think these are the things that happens. और जरूरी नहीं है कि हर बार जो है आप लाइफ में रहें,
कभी कभी डार्कनेस भी फेस करना पड़ता है। इस डार्कनेस का नाम जो लोग कहते हैं कि फेलियर है, these failures are temporary, at the same time success is also temporary। कोई चीज़ आपके हाथ में ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है, तो जब तक रहती है उनसे सीखें और अप्रिशिएट करें थिंग्स अराउंड देम, even whether it's a failure or success, whether it's a dark or light, just learn something, because I think that's definitely has come to you to teach you something। if you don't learn, if you dissolve, डूब जाओगे तो कुछ नहीं, वो जिंदगी वो दिन भी चला जाएगा, वो पन्ना भी पलट जाएगा। तो चैप्टर 1 से चैप्टर 10 आ जाओगे जैसे हमने कहा था, लेकिन अगर आपने कुछ सीखा नहीं चैप्टर 1 to 9, देन चैप्टर 10 को भी आप जो वो एंजॉय नहीं कर पाओगे। Well, absolutely. ये जिंदगी है, ये जिंदगी हमें अलग अलग तजुर्बे हम देती है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस आते हैं, एंड you know what, it's all okay, and it's all part of life. I think कोई चीज, when it doesn't give you the outcome that you're hoping for, maybe it's time to pivot, maybe it's time to redefine, right, reframe your skills, maybe it's time to learn something different. It's like, just photographers, they are trying to take a picture, they're trying to take a photograph, how they move their lens, and they're trying to look around to find, adjust it, and different shots लेने की कोशिश कर रहे हैं. And so that's basically your outlook on life is just so important. It's all your outlook, right? Yeah, that's a beautiful analogy, Saima, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले भी सुना था कि देखो सिचुएशन वहाँ पे नज़ारा एक ही है, लेकिन कैमरामैन अपने लेंस को चेंज करता है। तो यानी कि सिचुएशन वहाँ पे एक ही है, लेकिन आसपास जो 10 लोग होते हैं वो अपने लेंस को चेंज करें ताकि पिक्चर जो अच्छे से कैप्चर हो जाए। यानी कि आप जो है वो परसीव करते हो प्रॉपर्ली आप कैप्चर कर पाओ। बिकॉज रिसेंटली दैट आई सेड दैट पीपल हु contacted me, and because the first person who was thinking they were discussing, but the other person was thinking they were accusing, तो you cannot change such person, you can never आप change, किसी को भी नहीं बदल सकते, किसी को नहीं बदल सकते। लेकिन the first person did not alter, did not move, and then they were just laughing and then just receiving things, because उन्हें लगा कि unless we talk about certain things will not happen, because पीछे पीछे बहुत चलती रहेंगी। तो एक बार बात तो कर ले, लेकिन बात करने के बाद ये फैसला हुआ कि ये तुम ये कुछ कर रहे, अरे यार इनको तुम बदल नहीं सकते, इट इज ओके। अगर आपने अपना संतुलन संभाल के रखा है, regardless of whatever they said, that's good for you. Don't worry, because you cannot change that person. Just receive them, embrace them, and then move on. That's very important. अगर वो रिश्ता रहा तो रहा, नहीं रहा तो नहीं रहा, you cannot do anything. See, the thing is, जिंदगी में हर स्टेज के ऊपर हर चीज नहीं वर्क करती है। कुछ चीजें रिडंडेंट हो जाती हैं लाइफ के अलग अलग मोड के अंदर। सो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये चीज है कि कभी अपने आप को पुट डाउन किसी भी चीज के लिए नहीं करो। आपकी लाइफ में ऑलवेज यू आर राइट, in the sense कि not from an ego perspective, but you look out for you. And अगर आपकी जिंदगी में आपको कोई भी आके ये चीज बोलता है कि तुम गलत कर रहे हो, या तुम ये, या लाइफ में आप बिजनेस कर रहे हो और आपके क्लाइंट्स आपको कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, हर चीज को सुनो, but only take what is necessary for you to take in your life. Otherwise, focus on you, build yourself, अपनी ग्रोथ के ऊपर। लाइफ के अंदर आपके पास वो लोग आपको नजर आए जो आते हैं, आपसे मिलते हैं, और आपको ये फील होता है कि ये मेरी एनर्जी को डिप्लीट कर दिया इन्होंने, तो then get away from those people. You have a choice to make sure that you are responsible for yourself. Make sure you look after yourself, because जब आप अपने, और ये हम हमेशा इस बात को दोहराते हैं कि जब आप अपना ख्याल रखते हैं और जब आपका खुद का कप फुल होता है, तो ही आप अपने इर्द गिर्द हर चीज को नर्चर कर सकते हैं। कल्पना, अब आजकल बच्चे पिक्चर्स खींचते हैं, राइट? तो जब भी मैं अपने बच्चों से बोलती हूँ कि प्लीज मेरी तस्वीर खींचो, तो वो बोलते हैं ओके, आप अपने हाथ मूव करो, इधर लेफ्ट राइट टर्न करो, एंड दे लिटरली शूट एंड दे टेक लाइक 200 to 300 photographs in a span of 2 minutes or a minute, right? उसमें majority जो photographs हैं उसमें कुछ ना कुछ, even if it's a slight variation, but there's a slight variation in all those different photographs, which means that has to do with our outlook on life. एक certain stance में खड़े में हैं, मगर एक अलग अलग नजरिए आ जाते हैं, right? बिल्कुल सही है, क्योंकि आई थिंक ये हम बात
बार दोहराते हमारे शो में कि नज़र का भी इलाज किया जा सकता है पर नज़र का नहीं। कोई चीज़ ये जो बात आप एग्जाम्पल दे रहे हो पिक्चर स्लीप की बच्चों की आदत जो एक burst mode होता है which is called burst, they just take 10 photos and then they just pick one and then go it. So ज़िंदगी में भी ऐसे ही फिल्टर करना हमें भी आना चाहिए क्योंकि देखो वी ऑल नो कि क्लाउड के पीछे जो है बादल के पीछे धूप होती है लेकिन इट्स जस्ट दैट हमको दिखता नहीं है। ज़िंदगी भी ऐसे कि हमको लगता है कि उसके आगे कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, इनका कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक वैल्यू योरसेल्फ, the point is just self value is more important. किसी ने कुछ कहा है तो just don't completely incline towards them and just हाम कीजिए। value yourself also क्योंकि अगर आपने ये कहा है तो just if you think that happened then admit it, if you didn't say it just admit it as well. You don't have to completely nod your head for everything, especially for the women, many women who actually think that कि एक self blame होता है या फिर they either self blame or blame others around them. Don't do that। और इसी के साथ हम सुनाना चाहेंगे ये अगला गाना और गाने से पहले बताऊंगी कि talking about profession that pay well, technology is the way to go. If you are the one who aspires to get into IT and earn a 6-digit figure income, you can. It's simple, just get trained with tech files, course like DevOps, Java developer, SDET software, QA automation testing, plus a job placement program. Tech Files, you don't just get trained, you also get hired. Register at techfiles.com. The new job हमारी caller थी, अगर if she's looking something that works out, definitely try reaching out to them, just techfiles.com. हो सकता है कि things will work out for you. And with that, we'll go to this song. आइना मुझसे दिया गया है दुनिया में। Huh? Sing कितना टाइम हुआ है? I just need to celebrate. So the thing is, I can't see from here. A lot of people are wishing happy birthday, but thank you, my Facebook friends. आज मेरा जो कैमरा है थोड़ा दूर है, but thank you for connecting with me on air on Facebook, and thank you for the birthday wishes. And Saima, my co-host, has got a lovely cake. So this is Saima. Hello. I can tell you who all is wishing you. Let's see, Sadhana. Okay. She loves your voice and your advice, Kalpana. Rakhi, Swarna, Dipti. All right. Thank you, all of you. Thank you. Thank you for staying connected. And yes, Saima, my beautiful co-host, got a cake और बहुत खूबसूरत एक ड्रेस लेकर आई है जो मैं अगले कल से पहनने वाली हूँ। And I got a lovely gift from my friends too. तो ये बहुत खूबसूरत earrings जो मैं normally earrings पहनती नहीं हूँ unless it's a saree, but I do. Nice. And my kids, actually, I should mention this. My children this morning they got this Kendra Scott bracelet, earrings, nice. necklace and earrings जो मैंने पहना नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि मैंने again I changed. आप ड्रेस के साथ पहन सकते हो next week. Yes, I'll do that. Definitely. Next week कल्पना पूरी सच के आएगी. So okay, so let's see who else is here. Mohammed Ramzan, thank you for being here. Anita, how are you doing? Yusuf Khan, कैसे हैं आप? Zankhana Shah, how are you, Zankhana? Salman Khan, Janalam Bandro, कैसे हैं आप लोग सब? So how's everyone doing? Thank you all for being here. We have अभी हम break पे जाएंगे. उसके बाद we have around 30 minutes left in the show. So so we've been talking about failure. Today when I started the show, the real estate segment, so much was going on, including Kalpana's birthday. Yeah, I forgot to turn live. Saima is very good in doing multitasking on the sets actually, because there's something मैं करती हूँ, लेकिन the way you manage this device, and then wow. I forgot to turn on this live on StreamYard.
क्योंकि मैंने उधर अपना फोन रख दिया था उस साइट पे Oh, अच्छा, for अच्छा। Instagram, so I forgot to turn it on See, live. I bought this camera और मैं इसका wire लाना भूल गई, so I cannot turn it on and I can just put the stand. So these things happen. And These that's things fine, don't worry. happen, you know, सब कुछ हो रहा होता है, and that's So okay. I'll go back. We have 3 minutes, 2 minutes, and okay. So this 2 minutes. Do you think we can go in 1 minute? All right, so welcome back. You know what? Don't be embarrassed by your failure. Learn from them and start again. This is Richard Branson. Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. That was Winston Churchill. And the last one, there is only one thing that makes a dream impossible to achieve, the fear of failure. That was Paulo Coelho. बिल्कुल सही. I think that's what I think. Even when I was looking at one of the interviews or one of the celebrity, I forgot the name, but then he was actually giving some suggestions to the upcoming actresses, and he said that be in the race always. Do not give up. Sometimes you may have a hit movie, and sometimes you have a blockbuster movie. Sometimes you hit the people do not like it, but do not give up. Keep choosing the different versatility is very important. Choose different roles. I think as long as you're in the race, I mean, don't run for anything, but as long as you're in the journey, you will definitely learn everything, and people will notice you sooner or later. I think that's something is even life also the same thing. Be in that journey always. Do not give up. Do not sink in. Things will happen soon, and then with that, we have only a few seconds to go on break. We'll definitely come back. But before the break, I would like to say that Attorney J. Marco from Marco Law Offices, a full service law firm located here in Dallas. He has all the answers for the good questions on air every Tuesday, evening 4:30 to 5 p.m. If you want to call, which is 214-378-8880, or visit marcolawoffices.com. So this is so cool. This is Gangya. Good afternoon, Radio Caravan. कैसे हैं आप? Oh, hi, a long time. Matching. Thank you, Chitraji. कैसे हैं आप? Thank you. Uh-huh. So you build on failure. You use failure as a stepping That's so stone. beautiful. Thank you so much. Close the door on the past. You don't try to forget the mistakes, but you don't dwell on it. You don't let it take any of your energy or any of your time or any of your energy, any of your happiness, any of your space. So that is so important. You learn from failure, you build from failure, and you take failure as something positive to help you. You know, everything, Kalpana, everything in life that happens, we are so busy running all the time that we don't realize, but everything that is happening in our life is teaching us something. We can learn so much from our body. कहीं पे भी कोई एक पेन, कोई भी चीज फील होती है. So okay, for a second, just go within and seek it in your body. Do you feel any ache or pain anywhere? Okay, let me see. There's no pain at this moment which I feel at this moment, but there are different times where I feel pain on my leg. अभी तो नहीं है, लेकिन there are certain poses I think when I walk, वो knee में I think एक थोड़ा सा pinching pain होता है कभी कभार. Yes, I do have that. So I hold my phone a lot. So even when I'm on my computer or if I'm watching Netflix and I'm watching a movie, तो वो बच्चों की तरह, which the youngsters you see them do these days, okay, even if they are sitting there watching, they still have their device in one hand. तो वो मेरे हाथ में भी मेरा फोन का डिवाइस होता है, उसके ऊपर वो चाहे मैं अपने ईमेल्स चेक कर रही हूँ, मैं अपने शॉपिंग देख रही हूँ और सामने मेरा नेटफ्लिक्स चल रहा है, तो वो होल्ड करने से आई हैव नोटिस कि मेरा जो थंब है
मैं उसको उसके ऊपर वेट पड़ता है काफ़ी फ़ोन होल्ड करने का. बट बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि each and every part of us, our body, things that happen in our life, they're actually trying to teach us something. Tell you so. And they're trying to tell us, even in our body, things happen and we ignore them. But our body is giving us signals. It's telling us that our body is meant to self heal. Mhm. If you use a lot in one certain area of our body, definitely it's going to just exhaust and show the signs of what you're saying because you're using the phone, Yes. and that muscle is actually probably Yes. exhausted with that. So I think that's true. I think the life does tell us something, or no problem occurs without our conscious or unconscious attempt towards it. क्योंकि कोई भी चीज़ धीरे 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 हो जाती है, कभी अचानक हिट कर जाती है और हमें ये जान नहीं पाते. कुछ लोग जान कर भी डिनाइल में रहते हैं कि भाई ये फलाना टाइम पे ये हुआ था इसलिए अब ये पेन है जिंदगी में, चाहे वो समस्या की वजह से हो या फिर दिस बॉडी पेन. So I think we don't realize. I think that's very true. The last topic, the last week's topic, which you said, introspect yourself. Just turn back and look upon yourself. As Life is all about introspection. Life is all about khud ki growth, khud ki changes. Because आप दूसरों को चेंज कर, स्पेशली मैं फेसबुक पे देखती हूँ कल्पना, जो लोग हर वक्त पोस्ट करते हैं कि पीपल टेक एडवांटेज ऑफ मी, दे टेक एडवांटेज ऑफ हाउ नाइस आई एम. You shouldn't let anyone take advantage of you. No matter how nice you are, don't let anyone walk over you, because when you let someone, let them take you for granted too. That is also. but don't, that's up to you. You define how you are treated. All right, this song was requested by Saima ji. मेरे पास किया था. She wished me happy birthday. Thank you everyone, all the callers जिन्होंने wish किया. And Chitra ji, thank you. She also wanted me to play one of my favorite songs क्योंकि ये already request line में थी तो मैंने सोचा कि चलो यही चला लेते हैं. And thank you. Thank you. I think my day is already done क्योंकि मुझे काफी gifts आ रही सुबह से कॉल सारी सबसे ज़्यादा gifts से ज़्यादा these blessings and wishes is warm. Wishes is very important. And I really am loving that. And coming back to the topic of failure, and yes, जो हम बात कर रहे थे off air in this break time, Saima, कि जो आप बता रही हैं, जो एनालॉजी आपने लिया है कि कोई भी चीज़ हम जिंदगी में जो ये फेलियर्स होती हैं, ये कोई भी जो दिस अनप्लेजेंट सिचुएशन जो हम नहीं चाहते, एक्सपेक्ट कुछ करते हैं, कुछ हो जाता है, कहीं ना कहीं जाने या अनजाने में I think something might have happened in the past which we may not realize, और उसी का जो रिजल्ट होता है ये हिट करता है आफ्टर सम टाइम. और जब हम इसको प्रॉपर से इंट्रोस्पेक्ट करें कि probably we have overused this or we did not use it or we let other people take us for granted, we probably have let other people take advantage of us. तो ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही डायनामिक्स आती हैं इसके अंदर. I think everybody may have a different examples to it, लेकिन ये जो भी अनसक्सेसफुल थिंग्स जो हमारी जिंदगी में आती है कहीं ना कहीं जाने जाने हमने कुछ किया होगा. बट लेकिन इफ यू ब्लेम देम, इफ यू ब्लेम योरसेल्फ या ब्लेम अदर्स, नथिंग्स गोइंग टू हैपन. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट इवॉल्व एंड रेज. ठीक है, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं. I have a courage to just take it and I have a courage to move on. I have a courage to analyze myself and analyze the situation in a different perception. और मैं आगे चलने के लिए तैयार हूँ. I think ये इमोशन लेके जाना बहुत जरूरी है. बिल्कुल. See, the thing is कि I think we are made complete by our Creator. We are complete in the sense that we have a soul, we have intuition, we have a brain. If God did not want us to think, if God did not want us to use our common sense, our logic,
then we wouldn't have had a brain, right? Because that means that God did not want us to question anything, and we should just use our heart, and we should just blindly, just keep following things and keep doing things that don't make any sense. But we have been given a brain, and we have been given a sense of logic. So we question things, we analyze things, we try to make sense out of things which do not make any sense. So we are complete. हमारी body हमें जो questions हैं आपके, if you look within, if you sit in silence and अपने अंदर तलाश करोगे, तो आपको हर सवाल के जवाब मिल जाएंगे. आपकी बॉडी जब आउट ऑफ बैलेंस हो रही होगी, तो वो आपको फिजिकल इंडिकेशंस देना शुरू कर देती है कि यू नो व्हाट, समथिंग इज रॉन्ग. जब अगर आप अपने बच्चों को देख रहे हैं या खुद एंजाइटी डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि यू आर टेकिंग इन समथिंग and you are creating worry over it, and you are creating fear that you feel that something is not going to work out a certain way, and you feel anxiety over it. So ये सब चीजें जो हैं, they are instilled in us, right? Right क्या है, wrong क्या है, ये किसने define किया है कि अगर मैं इस कपड़े को इस तरह पहनूंगी तो ये right है, और अगर मैं इस कपड़े को उस तरह पहनूंगी तो वो रॉन्ग है, राइट? ये सब सोसाइटी की क्रिएटेड डेफिनेशंस हैं, बट दैट डजंट नेसेसरीली मीन कि दैट इज द ओनली वे, दैट देयर इज ओनली वन वे टू डू थिंग्स. That's true, Saima. I think it's all about how you perceive things, how you have the courage to take things, whatever you're doing, be responsible of whatever decisions you have taken, and चाहे जैसे कि whatever analogy it could be, whether it's shaping up your body or is it shaping up your life. I think it's all about how you have decided to live with it. And do you have the courage to receive the trolls from others? Do you have the courage to just ignore these trolls? So this is all about how you are evolving day to day. और एक बात मैंने कुछ टाइम पहले सुना था, I think Japan में, I don't quite remember right now. I think I'll definitely Google it and let you know the next week. लेकिन जो चीज़ मुझे याद है, I think Japanese में थेरेपी है जिसका नाम शायद किंग फू है या फिर किंग शू समथिंग है, but I'm sorry, I'm not to understand the term. वो क्या करता है कि थेरेपी में, यू नो हाउ यू एक प्लेट टूट जाता है, राइट? एक प्लेट टूटने टुकड़े हो जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि प्लेट टूट गया, इसे गिरा दें, इसका कोई काम नहीं है. लेकिन दैट थेरेपी इटसेल्फ इज अबाउट what they do is in that breaking उनको जोड़ते हैं, और जोड़ के उसमें एक सिल्वर लाइनिंग या गोल्ड लाइनिंग एक अच्छा से पेंटिंग कर देते हैं, and they make the plate again reusable, they make it ready. So that is called a therapy. I don't quite remember the term, which I will definitely find out. So that is a very beautiful analogy. When I did, people actually go, a lot of people from overseas, they also go there, ये therapy लेने के लिए करते हैं. जिंदगी में काफी चीजें हो जाती हैं, हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं. It's called kintsugi. Now I don't know if correct pronunciation क्या है, but that's what it is. And it's, I think, when things are this life and shatters, I think people have nothing to do and their relationship broken apart. But this therapy actually teaches you how they can actually form that silver line and the gold line into it, and then still recreate and then just evolve from it. That's a beautiful, beautiful thing. I think we should definitely work on such things. Absolutely, because मेरी जो बड़ी बेटी है कल्पना, शी इज अ परफेक्शनिस्ट. मेरी मम इज अ परफेक्शनिस्ट, और ये काफी सारे लियोज हैं मेरे इर्द गिर्द, सारे लायंस हैं, शेर हैं, और ये सब परफेक्शनिस्ट है, यू नो. सो खैर मेरी बेटी इज नॉट अ लियो, बट शी इज अ परफेक्शनिस्ट. बट आई सी कि ये जो परफेक्शनिस्ट हैं, they make their own life hell, because उनकी वो इतनी मेहनत, इतनी कोशिश, हर चीज, वो परफेक्शन के अंदर इतना बिजी रहते हैं. बट जैसे आपने अभी ये यू नो ये जो अभी आपने थ्योरी शेयर की, दिस इज व्हाट लाइफ इज. हम we are this amazingly brilliantly created creatures of our creator, but we are not perfect, and we are not meant to be perfect. और जब जिंदगी में वो मोड़ आता है जब आपके टुकड़े होते हैं, तो आप अपने टुकड़ों को फिर से जोड़ के, and you reshape yourself, right? Like you shared this, and it's such a brilliant
analogy and a brilliant way of sharing the reality of life and life's journey. और मगर इसके साथ ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि जब ज़िंदगी में ये हादसे होते हैं और जब ज़िंदगी में ये चीज़ें आती हैं जो हमें चैलेंज करती हैं, जो हमारा इम्तिहान लेती हैं, तो उसके बाद अपने आप को जोड़ के और खड़ा होना, and to keep going, it's absolutely important. Teach your children courage, right? कर पाता है, जैसे कि नेल्सन मंडेला आप देख लीजिए, जो जानते हैं उनकी स्टोरी जानते हैं, 27 years he was in prison, right? तो वो he could have been shattered, he could have been just disappointed and depressed with the life, and he could have done nothing. But वो जो जिंदगी उन्होंने गुजारी उसके साथ, he actually connected the corners of the sadness, and then everything he started writing, he started evolving day by day, and we know that he's a Nobel Prize winner, Nelson Mandela. हम इन सब लेजेंड्स के साथ काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं साइमा, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग दैट वी हैव टू गो टू दैट पिनकल, बट वी डेफिनेटली कैन टेक वन स्टेप एट अ टाइम towards this journey of progress, towards the journey of doing something in the life, instead of just like doing nothing and feeling sad and bad about ourselves and then blaming others. I think ये सब चीज़ें हम काफ़ी लोगों को देख के सीख सकते हैं, थेरेपी से सीख सकते हैं. There are many things that we can do. It all depends कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ किस तरह से शेप करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं. हो सकता है कि आज आपकी ज़िंदगी में किसी ने कुछ कहा, रिश्ते टूट गए हों, आई थिंक आपकी जॉब में सक्सेस नहीं मिला है, प्रोग्रेस नहीं मिला है, प्रमोशन नहीं आ रहे हैं, बट इट्स ओके यार. जो चीज़ अभी आपके हाथ में है उसे संभाल के रखिए, उससे खुश रहिए, उसके साथ ही चलते रहिए. हो सकता है कि उसी बीच से जो है वो पेड़ उगेगा और आई थिंक छाया मिलेगी, एंड देन बजाय इस धूप के होने की, तपती धूप के होने की वजह से भी आप जो है इस ये जो अपने अपने अंदर जो बीज बोया है, जो ये जो ग्रो हो रहा है, इसकी वजह से जो है आप जो है खुश रह सकते हैं और खुश रख सकते हैं आसपास के लोगों को. Embrace change, embrace growth. Change is necessary in life. Most people fight change, and you fight कि चीज़ें नहीं, तब्दीली नहीं आए, बट ये तब्दीली बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में इवॉल्व करने के लिए. एंड आई थिंक बहुत अगर इस शो के थ्रू, इफ देयर इज वन थिंग that I would love to change, or I would love to touch lives, are the lives of children, because they are the new generation. जब हम अपने बच्चों के ऊपर इतना बोझ डालते हैं, इमोशनली, मेंटली, जब वो क्रैश होना शुरू करते हैं, इट्स एन इंडिकेशन कि आप अपने आप को देखें, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन है in what they are going through. So if you want to see the trajectory of your children change, if you want to see कि उनकी जिंदगी बदलनी शुरू हो रही है, या आप चाह रहे हैं कि वो सफर कर रहे हैं और उनकी जिंदगी बदले, तो आप उनको बदलने की बजाय खुद को बदलना शुरू करें. बिल्कुल सही है. आई थिंक वही हम कर सकते हैं, और दैट्स द बेस्ट थिंग, कि जस्ट अपने आप को बदल सकते हैं, क्योंकि किसी और को बदलने की ज़रूरत है ही नहीं. अगर if you just learn to change yourself, that's more important, because every change, every progress, every movement starts within you. So it has to be you, to change your perception, change your trajectory. That's very important. And with that, I would also like to give you information on what's happening around us. Nritya Shakti proudly presents an Indian folk dance festival, Varshini, welcoming the monsoon, on Thursday, September 25th at Plaza Theatre in Garland from 2 p.m. onwards. उसके अलावा हो रहा है DFW International Sports Club presents DFW Kabaddi Cup on Saturday, October 1st at 506 Gatewood Road, Garland from 10 p.m. It's a free event on recent flood in Pakistan is one of the worst floods in history. So BOH, which is Beauty of Humanity, Inc. is the tax-exempt organization, has started some work to help the victims, but it has not enough funds to finish its project. It needs at least $50,000 right now. Please relate to admin@beautyofhumanityinc.org. Again, it's admin@beautyofhumanityinc.org. So इतनी सारी चीज़ें हैं कल्पना. Failure is so important. कि failure should be like our teacher, right? Failure is something that teaches us. It's just a detour. It's not a dead end, right? Dead end in life is when you don't learn, when you don't evolve, when you don't want to change.
That's what failure is. um, may something really personal I'm going to share. I'm a single mom, and I have my two daughters who are with me. Kalpana, I have spent the past 5 6 years working on, since 2016, just working on changing myself and my growth and my energy. And there have been days when I have spent anywhere from 6 to 7 hours working on personal growth and change, trying to figure out कि मेरे लिए क्या चीज़ वर्क करेगी. And जब मैंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया, अ, अभी वो मोड़ है मेरी लाइफ का, कि अभी मेरी बेटी की गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो मैं उसको, आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि इसको क्या करना है. एंड आई वाज टेलिंग हर क्योंकि गाड़ी छेक अगर कर रही है, तो आई एम गोइंग टू टेक इट, तुम मेरी गाड़ी काम पर ले जाओ, आई एम गोइंग टू टेक योर कार. And my daughter was like, Mom, I don't want you driving this car because I don't want something happening to you. What I'm basically trying to say is that's the relationship, my relationship with my daughter. And it's taken so much hard work for us to reach this point where I mean this much to her. और उसमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है, उसमें एवरी सिंगल डे, एक एक लम्हे के अंदर अपने ऊपर वर्क करना पड़ा है, अपने आप को चेंज करना पड़ा है, to reach that point where you become someone who is truly deserving and worthy of earning your children's respect and your children's love. So that's a beautiful thing, Saima, the emotional thing that you shared actually. I think, and the question that you asked in the beginning of the show that after the beginning of the chat, why do you have children, right? And at that point, I didn't have an answer because that was something like it's a big question for me to answer. I was not ready for that. लेकिन अभी जब आप बात कर रही हैं, तो I think that it's kind of like a rectangular square picture frame which have four corners. It's just my perception. Everybody have a different opinion maybe, but लेकिन ये जो एक फ्रेम है जिसमें जो फोर कॉर्नर्स हैं एंड दीज डॉट्स टू कनेक्ट, आई थिंक टू कंप्लीट दैट. हो सकता है कि एक डॉट शायद थोड़ा सा टूटा फूटा हो, कभी रिश्ते थोड़े से निकल जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, दे गो अवे फ्रॉम योर लाइफ, बट स्टिल हैविंग सेड दैट आई थिंक जो डॉट्स कनेक्ट आपकी बेटी ने आपके साथ किया with whatever you worked with you, I think that is a very marvelous thing because you have actually are introspecting yourself. What can I do? What can I do? Because your focus was to be it's my responsibility. Of course, they have their life, they have their choices, they have their responsibility to do. They can. You also in that dot of connection, right? That connectivity where you have worked on yourself, where she is able to connect with you. वरना बाज़ दफ़ा आजकल ज़िंदगी में ऐसे हो जाता है सना कि रिश्ते हम बन जाते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन kids don't get connected with us. They don't share things with us. There's no connection. That corners are not being connected properly. I think दो चीज़ें अगर एक चीज़ टूट भी जाती है तो that's okay. Picture is still intact. But if more than the two things are not intact and broken, then it's very hard. I feel like that there's nothing there. So I think they're connecting dots and working on because you have started working on yourself. That's why she was able to connect those dots. I think that's very important. Because मैंने अपने आप को चेंज किया है और मैं अपने आप को चेंज करके उस लेवल पे अपने आप को लेके गई हूँ जिस लेवल पे वो है, बजाय इसके कि मैं एज ए टिपिकल देसी पेरेंट खड़े होके कहूँ कि आई एम द पेरेंट एंड तुम फर्मा बरदार बनो और जो मैंने कह दिया है वो पत्थर की लकीर है एंड you have to respect me. No, these kids say respect is earned and you have to earn it, and it's taken me these 6 years to earn that respect, and it's a constant ongoing journey to earn my children's respect and to be this person where my kids are proud of me and they feel that what they are like, you're a kick-ass woman, Mom. We are and it doesn't have, and I'm not talking about any financial or any ke career ye hai ya wo hai. It's not that. It's just I think it has to do with me telling my kids to be courageous. It has to do with me
trying to see कि अगर मेरे मुंह से कुछ निकला है और अगर my kids react to it, तो बजाय इसके कि मैं बोलूं कि तुम मेरे से बदतमीजी क्यों कर रहे हो, या तुम मेरे से जबान चला रहे हो, या ये कर रहे हो या वो कर रहे हो, जो कि सब देसी चीजें हैं, मैं अब सोचती हूँ कि ओके, हाउ डू आई नीड टू साइमा गेट ओवर इट, retuning karo, something you're saying is not resonating with them, so fix it within you, so you can, so you know, it's constant self growth and self worth, and something that I've constantly working on कि मैं उनको build कर सकूं बजाय इसके कि मैं उनको break करूं. And you know what? Like you said, yes, things takes time because it took 6 years for you. It took me 3 years also to evolve myself and learn things in a different perspective, take things and embrace in a different way also. और मैंने जैसे कहा था कि पहले भी शो में कि there was a time when I took my kids out and I said sorry for the way I treated you in childhood. It was a bit, I was a young mom. I had my own insecurities which I pointed upon you, which I could have handled in a different way. लेकिन ये हम सब करते हैं, जाने अनजाने में करते, कोई जानबूझ के सब नहीं करता. लेकिन once you realize it, once you know it, I think that's the point where you stop and there's a speed breaker. Just look back and see and admit it, and that's what I did. I went back and said I'm sorry with the way, and moving on. It doesn't mean that I'm not going to make any mistakes. हो सकता है कि आगे भी हो सकता है, लेकिन at least जिंदगी में वो एक ठहराव आ जाता है और ठहराव आना जरूरी होता है. And then things do take time, but like I said always, whatever takes time is a learning time. I think everything is a learning time. It all depends on whether you want to learn or whether you want to stay on that dead end and want people to come your way. That is, you know that a lot of people, a lot of examples around them, the people who want to come always their way, people just get distant from them. They don't want to go their way unless you want to step forward and go a little bit and make those connections, that emotional connections, that social connection. These all connections is what is all about life. And to make these connections, you have to have that courage to change yourself and to think in a different perspective. And these are all things. So, and then even after that, even tomorrow you might face failure, you might face success, you might Bilkul. things happen. But this is part of life. Like I said, the example of ECG. ECG is up and down, up and down. The flat line only happens when there's no life. I think life will have ups and downs just like ECG. That's why you need to just evolve, no matter like the small things, big things. It all depends on. See again, 10% is what happens, 90% is how we react and how we perceive things, right? We all know that kind of thing. So I think ये सब चीजें बिल्कुल. जान सकते हैं कि जब हम इन चीज से बाहर निकल के अपने आप पे हम कभी भी बारे सोचें. It's a basically, you know, reframe failure, reframe the negative words in your head, because the words which flow through your brain, the thoughts which flow through you, create your destiny. Start being attentive towards what you're thinking. अगर आप ये सोच रहे हो कि यार उसके पास ये गाड़ी है और मेरे पास नहीं है, ये ज्यादा कोई खुशकिस्मत है और मेरी किस्मत कितनी खराब है, अगर आप अपनी सारी तवानाई और सारी एनर्जी इसी में गुजार देंगे कि दूसरा सामने वाला कितना खुशकिस्मत है और आप नहीं हो, तो आपकी जिंदगी उसी एनवी और जेलसी में गुजर जाएगी. बजाय इसके आप अपने खुद के ऊपर फोकस करो और आप ये देखो कि आपकी कौन सी ख्वाहिशात हैं, आपकी कौन सी ड्रीम्स हैं, एंड देन वर्क स्टेप बाय स्टेप वर्क ऑन मेकिंग दोस थिंग्स कम ट्रू फॉर यू. Reframe the words, reframe your thoughts, reframe your life. Focus on, don't let people take advantage of you. अगर आप हर वक्त वो विक्टिम मोड में और अगर आप हर वक्त ये बैठ के सोचते हो कि दूसरे मेरा फायदा उठाते हैं, तो अरे भाई दूसरे तुम्हारा हमेशा क्यों फायदा उठाते हैं? तुम क्यों दूसरों को फायदा उठाने देते हो? अगर सामने कोई चीज तुम्हें कोई कह रहा है तो weigh it, look at it, do it only if it's beneficial for you, only if it will give you happiness. If it doesn't, if it will make you fill you, consume you with negative energy, fill you with negative emotions, then don't do it. It's not worth it. Nobody can force you unless you're not ready for it, and so that's very true. I think people will say based on their upbringing, based on their perceptions, but it all depends on how you perceive things. I think इन सब चीज़ से उठना, बाहर आना और अपने आप को सरफेस करना तो ज़रूरी होता है ज़िंदगी में. तब फिर फेलियर क्या सक्सेस क्या आपकी ज़िंदगी बैलेंस रहने लगती है. You will have the composed way of talking to anybody. You will not lose your control with anyone. I think these small things, like see, any changes will happen with one step. क्योंकि बूंद बूंद से ही पानी भरता And वक्त लगता है.
वक्त लगता है, एंड ये वक्त जो है इस वक्त को एम्ब्रेस कीजिए. लाइक वी सेड, एनीथिंग दैट टेक्स टाइम इज अ लर्निंग टाइम, एंड लर्न फ्रॉम इट. कभी हम बच्चों से सीखते, कभी बड़ों से सीखते, कभी अपने आप की फेलियर से सीखते, कभी अपने आप की सिचुएशन से सीखते हैं. तो चाहे जो कुछ भी हो, आई थिंक Always be learning. ऑलवेज बी लर्निंग. एंड और वक्त रह गया बहुत थोड़ा सा, और हमारे पास आने वाली हमारी अगली आरजे आरजे अपर्णा कभी चाय प्रोग्राम लेकर. लेकिन जाने से पहले ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप आज डिनर तक नहीं जाना चाहते हैं तो मेकिनी में है इंडियन किचन, एंड वी वांट टू वेलकम दैट ऑन द एयरवेव्स ऑफ रेडियो कैरावान. जो रेस्टोरेंट है इंडियन किचन, it is at the intersection of Hardin and the M380. If you crave for authentic taste of food from Mumbai and Punjab, this is a place for you, because they have the authentic taste of homemade food: butter chicken, Bombay chicken, biryani, lambatar paneer, chole bhature, samosa, papri chaat, Bombay bhel, samosa chaat, बॉम्बे पाव भाजी, गाजर का हलवा, लस्सी, ये सब सुन के मेरे मुंह में पानी आ रहा है. Saima, and so definitely go visit their website and the restaurant itself. It is go It to sounds delicious. indiankitchen.com and check at creative videos of baking. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, in the time is 11:30 to 2 p.m. and 5:30 p.m. to 9 p.m. in the evening. And Sundays, they're open from 12 p.m. to 6 p.m. They're closed on Mondays, and now they're open on Tuesdays, 5:30 to 9 p.m. for dinner. So ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देती हूँ. आप कहीं जाना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली के आसपास हैं, बट वैसे भी आई थिंक दैरिसबर्ग से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है. एनी वेयर यू विल रीच अबाउट 40-50 मिनट्स में आप पहुँच ही जाओगे. So, as we approach the end of our show, just a few things I really want to point out real quick to change failure. You know what? If you're a novice, it's going to take you time to reach success. Learning opportunities. Always embrace to learn different things. Fear of failure is one of the strongest inhibitors of learning. If fear of failure stops you from learning and growing. So, always be ready to grow. Perfectionism. अगर आप बहुत perfectionist हैं, you will label things as failure even if they are not failures, but you will call them failures because it's not coming up to your expectation. Systematic bias, such biases, practices, beliefs embedded within a system that disadvantage different groups. So you know what, change your mindset, change how you perceive these different biases. Ambiguity, our world are increasingly ambiguous and unpredictable, so be ready for change and be ready for growth. All right, with that, we only have 2 more seconds to go. This is Kapil signing off, and we'll see you again next Thursday, 1 p.m. All right. Well, Facebook friends, thank you all for being here. Hey, Nargis, bahut shukriya. Thank you for being here. Eamon, how are you doing? Sukhvinder, bahut shukriya. Thank you for being here. So, thank you all for being here. Thank you for joining us every Thursday. We come to you from 123. This is Heart to Heart. This is Saima Dillon signing off. Take care. And with that, this is